people. So a very good evening to all of you. As you all know, we did start with the concept of para-completion in the last session, right? Para-completion start kiya tha humne, and we'll be continuing with that concept. We'll be having one more session, which is going to happen today. And we're going to finish this topic off today. And before starting with the questions, I would just want to brush up the concept once again so that you can just revise it in your minds. So first of all, let me ask you once, what is para-completion according to you? Now, everyone might be knowing about this. What is para-completion? Come on, your answers in the chat box, all of you. I want each one of you to participate. What is para-completion and what are you supposed to do? Yes, answers in the chat box. What is para-completion according to you? The name itself suggests, and you already have the answer with you guys. Come on. What is para-completion? Anticipate what the ending or missing line could be. Yes, Yogesh, absolutely. To complete a given paragraph. Yes, Nidhi. Completion of thought. Yes, Shubham, correct, absolutely. A complete paragraph. Yes, Harsh, correct. So it's really easy to understand. You're supposed to fill that statement which has a blank in front of you, right? आपको एक paragraph दिया होगा and you'll be given a blank which happens to be anywhere in the paragraph. It could be in the starting, it could be in the ending, it could be also somewhere in the middle. And you're supposed to choose an option which fills that blank, right? Which gets fit in that particular blank. तो basically आपको paragraph को complete करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो blank end में ही हो, वो कहीं पे भी हो सकती है, right? In most of the cases it happens to be in the end, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार end में ही हो. Okay, now what has to be the approach? I'll just go through this quickly and then we can quickly move on to questions. The very first thing which we need to do is we need to identify the gist of the paragraph. We need to identify the subject matter of the paragraph. कि वो paragraph है किस बारे में? Because unless you understand the subject matter, you won't be able to finish that paragraph off. Right? So सबसे पहली चीज, identifying the gist or the main idea or the subject matter of the paragraph. After that, you need to continue identifying the thread of the thought, right? Basically, आपको जो भी thought वहां पे paragraph में दिया है, आपको उसे thought को continuation में लेना है, right? And in order to continue that thought, it's very important for you to understand the thought itself. So if you don't understand the thought being portrayed in that paragraph, you won't be able to continue it. राइट सो जस्ट समझने के बाद आपको ये समझना है कि पूरा का पूरा थॉट या फिर पर्पस क्या है उस पैराग्राफ का. और अगर आपको वो थॉट या पर्पस समझ आ गया, यू कैन इजीली अटेम्प्ट द पैरा कंप्लीशन, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू चूज दैट वन ऑप्शन विच अकॉर्डिंग टू यू इज कमिंग इन कंटिन्यूएशन विद दैट थॉट प्रोसेस. राइट, तो जस्ट फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द कंटिन्यूइंग थ्रेड ऑफ थॉट विच द ऑथर puts in the form of a blank, right? Continue the thread of the thought, keeping in mind the first thing. Approach to finding the last line of the passage. It is not necessary कि हमेशा आपको last line find out करनी हो, कभी-कभी बीच की line भी आपको find out करनी पड़ सकती है, right? Now let's understand when we are looking for the last line, तो last line find out करते वक्त हमें कौन सी दो चीजें ध्यान में रखनी है. What two things or which two things we have to keep in our minds while finding out the last line or the ending of the paragraph? The first thing is the conclusion of the given passage, right? Conclusion क्या निकल के आ सकता है आपके paragraph का? What can be an accurate conclusion according to the author, right? जिसने वो paragraph लिखा है. And second चीज, what can be the logical extension of the second last line? आपके पास जो second last line है, यानी जो blank है, उससे just पहले वाली line, उसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है इन अ लॉजिकल वे. क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि ये जो ब्लैंक है वो हमेशा कंक्लूजन की तरह ही एक्ट करे. यू कुड बी गिवन एन इनकम्प्लीट पैराग्राफ एंड इस ब्लैंक के बाद भी पैराग्राफ कंटिन्यू हो सकता है. बेसिकली इफ यू फील दैट दिस ब्लैंक इज नॉट द कंक्लूजन, देन सिंपली लुक फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड लास्ट लाइन. राइट? क्लियर है?
After that, you also need to make sure कि कुछ tricks and approaches या strategies क्या रह सकती है in order for you to choose the correct answer. आपको tone देखना है paragraph का, right? Tone कैसा है? I'm just going through these things quickly because I understand we have understood all these things in detail in the previous session, right? तो मैं जल्दी में कर रही हूँ सब. I hope अगर आपको कोई doubt है then please feel free to ask them in the chat box, right? हमें टोन देखना है, इफ वेदर द टोन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. अगर टोन आपको लगता है कि पैराग्राफ की टोन पॉजिटिव है, then it will be very easy for you to eliminate the options जहां पे नेगेटिव या न्यूट्रल टोन दी गई है, right? So tone could be really helpful for you in finding out the correct answer. उसके बाद आपको स्टाइल देखनी है, that what is the writing style of the author. If you're wise enough or if you're clever enough to identify or recognize the style or the writing style of the author, then it will be again easier for you to choose the correct option. आपको एक बार राइटिंग स्टाइल पता चल गई तो आपको वैसा ही ऑप्शन देखना है जिसका जो राइटिंग स्टाइल है वो ऑथर की राइटिंग स्टाइल से मैच करता हो. And then you can quickly figure out the correct option which finishes the paragraph, right? So style, writing style of the author and tone of the author, both the things will play a very important role in choosing the correct option. उसके बाद keywords are basically the most important elements, right? जो most important valuable details है paragraph की, वो आपको टिक करनी है, so that ticking in the sense just remembering them in your mind, in your brain, so that you can concentrate more on those details when you look at them in those options. बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ज्यादा वैल्यूएबल डिटेल्स है, कीवर्ड्स है, राइट? Okay. After that, you also need to make sure that you do not have to get stuck on the last line. The last line is vastly different from the last thought. Paracompletion in a way is a thought completion. See, बहुत बार क्या होता है that by looking at the second last line or the last line of the paragraph, आपको ये लगता है that अच्छा ये last line है, अब इसके exactly जो option इससे connect होगा मैं वही choose करूंगा. बट आपका आंसर कई बार इससे गलत हो सकता है, because we always need to remember that para completion is not about last line completion, it's about the whole paragraph completion as the name itself suggests, right? तो आपको जो पैराग्राफ में आइडिया दिया है या थॉट दिया है उसे कंप्लीट करना है, ना कि लास्ट लाइन को, राइट? एंड ये दो चीजें आपको वापस याद रखनी है कि क्या पैरा कंप्लीशन नहीं हो सकता है. यू नो दैट आंसर क्या होगा, लेकिन क्या आंसर नहीं होगा वो भी आपको देखना जरूरी है. द फर्स्ट थिंग इज रीस्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन टू यू इन द पैसेज. See, if you feel or if you come across an option जहां पे simply repetition हुआ है कोई particular statement का, तो वो option आपका आंसर नहीं होगा. If you find an option which is merely a repetition of a previous statement stated in the paragraph, then in no case it will be the answer, right? And second thing is inference based on one of the lines from the passage. Inference is the conclusion drawn on the basis of the given facts. We do not have to draw the conclusion, but identify it. See, there will be times wherein you'll try to infer a lot of things. आपको अगर एक पैराग्राफ में 4-5 लाइंस दी है तो आप उन 4-5 लाइंस को समझ के बहुत सारे इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो, लेकिन द पैरा कंप्लीशन इज नॉट अबाउट फाइंडिंग कंक्लूजन्स डिपेंडिंग ऑन योर ओन थॉट प्रोसेस. आपको तो पढ़ के बहुत कुछ कंक्लूजन्स आ सकते हैं, माइंड में बहुत सारे इन्फ्रेंसेस आ सकते हैं, लेकिन आपको वो सारी बातें ऑप्शंस में नहीं देखनी है. You'll have to look for options which are correct according to the author's understanding, right? According to the author's thought process, and just simply try to complete the thought of the paragraph, nothing else. Is it clear? So finally approach क्या है एक para completion को solve करने की? Paragraph का gist समझो, subject matter समझो, right? After that, try to finish off that paragraph by identifying the continuing thread of thought. कि ऑथर ने ऐसी क्या चीज है जहां पे ब्लैंक रखा है, ऑथर आपको क्या चाहता है कि आप क्या फिनिश करो, क्या कंप्लीट करो, राइट? सो आइडेंटिफाई दैट कंटिन्यूइंग थ्रेड ऑफ थॉट, and after that just try to use some strategies and tricks such as concentrating on tone, style, writing style, concentrating on keywords, and thereby you'll end up choosing the correct option as the answer, the one which finishes the
thought of the paragraph. Clear? Can I have a yes on the chat box if this was understandable? Sab kuch wapas yaad aa gaya first session ka? Can I have a yes before we move on and solve the questions? Yes? A yes from all of you, please. So sorry. Okay, great. Let's move on to the next question. Those who have recently joined the session, I hope आपको समझ आया हो. So let's move to the questions. I think हमने 5 questions कर लिए थे. Was this done? Was this question done? Brain research, scientist, as we age, it was not done. It was done. Yeah, it was done. Done. Okay, fine. ठीक है, ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन था. व्हाट इज मेंट बाय कमिंग टू फील एट होम इन अ न्यू प्लेस और विथ न्यू पीपल. आई थिंक दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन. यस, ओके फाइन. यहां से हमारा करना बाकी था, राइट? द IMDS कम आउट विद डिस्मेइंग प्रेडिक्शन, ये वाला नहीं हुआ था. यहां से इट्स लेफ्ट. कम ऑन, स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ. Go with the approach and take your time. कोई जल्दी नहीं है. I am here right in front of you and we'll tackle or we'll deal with all the questions together. So take your time and come up with the correct answer. Come on. Oh, sorry, I was muted. Sorry. Aditi, resilience basically means किसी भी चीज को recover करना. Basically, it says that how you're able to deal with that situation or come out of that situation quickly. Yogesh, correct. Satyam, reattempt. Arjun, correct. Shashank, reattempt. Ashmit, reattempt. Naman, correct. Shubham, correct. Shashank, correct. Aditi, correct. Yes, Arjun. Just to have a good start. Harsh, reattempt. Okay, fine. So let's start with this. What does the paragraph mean to you? The paragraph says the Indian Meteorological Department, let's keep it IMD, has come out with a dismaying prediction. What do you understand by the word dismaying? Disheartening, or you can say बहुत ही खराब prediction निकल के आया, right? Has come out with a dismaying prediction that the southwest monsoon this year will be below normal. एक बहुत ही exactly not in favor you could say. एक बहुत ही खराब prediction निकल के आया that इस साल जो southwest monsoon है वो below normal हो सकती है, which means that we might not be able to receive much rainfall this year.
If this prognosis holds true, if this is true, it may mar. What do you understand the word mar? M-A-R? Mar yani किसी भी चीज को बिगाड़ देना, spoil कर देना, right? To spoil something. So if this stands true, then it may mar the prospects of redeeming the Rabi crop. Redeem करना यानी फिर से किसी चीज को back in track ले आना, normal कर देना. It may mar the prospects of redeeming the Rabi crop output losses through bumper harvests in the later Kharif season. राइट, बम्पर यानी कोई चीज बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना. तो अगर इनफ रेनफॉल नहीं होगी, देन डेफिनेटली इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस टू हैव अ ह्यूज आउटपुट ऑफ राबी क्रॉप as a bumper harvest, right? India's farm sector has certainly acquired a degree of resilience when it comes to the monsoon, as reflected in the positive growth numbers in all the weak monsoon years since 2009. सी वो बोल रहे हैं दैट इंडिया काफी केपेबल रहा है चीजों को रिकवर करने में. सो लेट्स से इवन देयर वाज इवन इफ इंडिया फेस्ड लेस रेनफॉल वन ईयर, इट वुड इजीली बी एबल टू रिकवर ऑल दोज क्रॉप्स हार्वेस्टिंग इन द फर्दर ईयर्स, राइट? किसी भी चीज को वो रिकवर कर लेता था बिकॉज इट हैज, आई मीन, एज वी ऑल नो दैट इंडिया हैज अ लॉट ऑफ weightage or the time or the capital being given to agriculture, राइट? तो उसके लिए ईजी होता था अगर कोई चीज बिगड़ भी जाती थी ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, तो उस चीज से बाहर आके रिकवर करना. सो इंडियाज फार्म सेक्टर हैज सर्टेनली एक्वायर्ड अ डिग्री ऑफ रेजिलियंस व्हेन इट कम्स टू मॉनसून, और ये हमें दिख सकता है पॉजिटिव नंबर्स से, राइट, इन ऑल द वीक मॉनसून ईयर्स. हाउएवर, now there is a contradiction. However, monsoon rainfall and its distribution still remain crucial, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज लैक ऑफ रेनफॉल से इंडिया बहुत जल्दी बाहर आ जाती है और रिकवर कर लेती है. दैट डजंट मीन दैट मॉनसून इज नॉट इंपॉर्टेंट. In spite of all these things, however, monsoon is still very crucial. Rainfall and its distribution is still very important for all of us, right? So this is what the paragraph says. Now let's try to choose the options by keeping one thing in our minds कि थॉट क्या है पैराग्राफ का, दैट मॉनसून इज इंपॉर्टेंट. दो इंडिया में बहुत कैपेबिलिटी है कि वो लैक ऑफ रेनफॉल से बाहर आके जल्दी चीजों को रिकवर कर ले, लेकिन फिर भी एंड में द पैराग्राफ सेज दैट मॉनसून इज स्टिल इंपॉर्टेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल इज स्टिल इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, राइट? इफ यू लुक एट द डी ऑप्शन, it says the monsoon's behavior this year seems to bear out the notion that climate change is affecting the Indian monsoon. Are we talking about climate change at all in this paragraph? Can we take it as an alien option because the climate change is basically adding an additional thought to the paragraph? We do not have to add any additional thoughts. We just have to stay stuck to the information given to us in the paragraph. So ye out hua, right? Same way, if you look at the B option, it says a poor monsoon and subsequent food inflation. Again, inflation is something which is new to the paragraph. Might well throw off the RBI's schedule for rate cuts. ये rate cuts या inflation की बात again कहीं पे भी नहीं हुई है. So we won't prefer choosing this as the answer. तो B और D eliminate हो गए, right? Now we are left with A and C. C क्या बोल रहा है? Nevertheless, the first stage monsoon forecast of the IMD should normally be taken with a pinch of salt, as the weather agency's accuracy record in this count is none too inspiring. ये बोल रहा है कि इतना ज्यादा प्रिडिक्शन या फोरकास्ट को हम सिंसियरली नहीं ले सकते बिकॉज इतना एक्यूरेट नहीं होता है वो प्रिडिक्शन. बट आर वी टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ मॉनसून? हमें तो सिर्फ फोरकास्ट में या प्रिडिक्शन में इतना प्रिडिक्ट किया है कि शायद जो रेनफॉल है वो बिलो नॉर्मल हो इस साल, राइट? बट आर वी सेइंग के मॉनसून का फर्स्ट स्टेज खराब रहेगा या सेकंड स्टेज खराब रहेगा या थर्ड स्टेज खराब रहेगा? आर वी टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ द सीजन एनीवेयर इन द पैराग्राफ? हमारा फोकस ये नहीं है. इवन दो इट वाज अ क्लोज कंटेंडर, इट वाज अ क्लोज ऑप्शन विच कुड हैव सर्व्ड एज एन आंसर, क्योंकि काफी कनेक्ट कर रहा है हमारे पैराग्राफ से. ये भी प्रिडिक्शन की ही बात कर रहा है, राइट? मॉनसून खराब होने की ही बात कर रहा है. अगेन इट सेज दैट द प्रिडिक्शन माइट नॉट बी इन आवर फेवर, but the focus of the passage is not about how the monsoon or how the stages of monsoon are divided.
The focus is how the monsoon is still important to all of us. And the importance is shown in A option, that they impact, right? What impacts? ये they किस लिए है? Exactly, Aditi. Correct. Absolutely. ये they किस लिए है? What is this they pronoun used for? Exactly. All these monsoon rainfall and the distribution. ये कैसा है जो distribution है monsoon की rainfall का वो. So they impact. How they are important, इसका importance समझाया है A में, that how they are crucial, they impact supplies and prices of most farm commodities, especially coarse cereals, I guess. Yeah, especially coarse cereals, pulses, oil seeds, vegetables, fruit, and livestock products, as well as the rural sector demand for consumer goods. Right now, you may feel कि ये rural sector एकदम से कहाँ से आ गया, ये भी तो एक odd element है. But see, try to understand, thought तो same है ना. आपको थॉट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है. थॉट ये है, एंडिंग थॉट ये है कि रेनफॉल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मॉनसून इज स्टिल क्रूशियल. एंड ए ऑप्शन वही कर रहा है, आपको इंपॉर्टेंस बता रहा है रेनफॉल की, दैट हाउ रेनफॉल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाई ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? काफी सारे लोगों का गलत था. सो आई होप यू गाइज आर क्लियर नाउ. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? हर्ष क्लियर? शशांक, अश्मित, सत्यम, any questions, guys? I hope it is clear to all of you. Can I have a yes in the chat box before we move on? Please keep participating in the chat box so that I can know if you guys are understanding things. It's very important to know कि आपको समझ आ रहा है या नहीं. Otherwise, there's no point. Right? Okay, great. Let's move on to the next question. Fine. The next question is right in front of you. Come on, start attempting. विकास ज्योति रीअटेम्प्ट. आराम से टाइम लो, प्लीज डोंट रश. Take your time and just which line, Aditi? Fourth option, a vocational approach to education eviscerates precisely the qualities that are most. Okay, so you could basically say that a vocational approach to education gives, I would say, less importance to the qualities, or I would say, results into a complete removal of the qualities, something like that. Shashank, correct. Ashmit, correct. Aditi, correct. Prashad, reattempt. Satyam, correct. Harsh, which line? Basically, it means जो चीज खराब हो गई है, but still, which line?
Yes, you could say it means something outdated, जो खराब हो गई है चीज, या फिर जो यूज में नहीं है अभी, basically, right? Um, yes, no, we have only one Aditi, Aditi Khushwaha, right? एक ही Aditi है, and your answer is correct. Ashmit correct, Prashad reattempt, Satyam correct, Khushi reattempt, Pragati reattempt, Rajdeep correct, Yogesh reattempt, Naman reattempt, Harsh reattempt, Shubham reattempt, Yogesh second answer is correct. ऊपर वाला incorrect है. Come on, last few seconds. Fine. Let's have a look. What is the paragraph talking about? Prashad, correct. Paragraph is basically talking about things that we keep in our mind when we choose our majors. होता है ना कि हमें कॉलेज में हमारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं. सो हमने लेट्स से फाइनेंस को मेजर लिया या मार्केटिंग को मेजर लिया. It's talking about that. So the premise that the choice of the major amounts to choosing a career path rests on a faulty notion that major is important for its content and that the acquisition of that content is valuable to employers, right? हम जब भी मेजर चूज करते हैं कॉलेज में या कभी भी, तो हमारे माइंड में यही रहता है दैट हम जो भी चूज करेंगे वो उसके कंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा एंड आगे जाके हमें जॉब में भी वो चीज काम लगेगी बिकॉज एम्प्लॉयर्स हमें कंटेंट के लिए हायर करेंगे, राइट? कंटेंट एम्प्लॉयर्स को बहुत वैल्यू देता है, आई मीन एम्प्लॉयर्स कंटेंट को बहुत वैल्यू देते हैं. बट दिस इज आवर फॉल्टी नोशन. ये गलत आइडिया है हमारा, राइट? तो सही आइडिया क्या है? But information is fairly easy to acquire, and what is acquired in 2015 will be obsolete by 2020. राइट? सो ये गलत नोशन है हमारा. क्यों गलत नोशन है? बिकॉज एम्प्लॉयर्स डू नॉट एट ऑल केयर अबाउट व्हाट यू हैव लर्नड. बिकॉज जो चीज आपने शायद कॉलेज में लर्न की होगी वो आप जॉब तक आते आते वो चीजें चेंज हो गई होगी. 5 years और probably 2-3 years back we did not have chat GPT or we did not have things such as AI, राइट? मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था. इनफैक्ट काफी सारी साइंस की भी थ्योरीज चेंज हो गई होगी. बहुत सारा कुछ चेंज हो जाता है 2-3 सालों में या 5 सालों में, राइट? सो if the employers would have given importance to the information or to the content, then there would have been no point, क्योंकि वो information और वो content तो change भी हो गया होगा जब तक आप job field में जाओगे तब तक. So employers do not give importance to the content that you have learned. तो किस चीज को importance देते हैं वो? What employers want are basic but difficult to acquire skills. वो आपकी skills को importance देते हैं कि आपके पास कैसी skills है जो कोई दूसरा copy नहीं कर सकता, जो कोई दूसरा acquire इतना easily नहीं कर सकता. When they ask students about their majors, it is usually not because they want to assess the applicant's mastery of the content, but rather because they want to know if the students can talk about what they have learned. राइट? सो इसीलिए आपको इंटरव्यू में भी ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं बिकॉज दे जस्ट वांट टू नो कि आप में कितनी क्रिएटिविटी है या फिर आप जो भी आपके अंदर नॉलेज है आप उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो. एक्सप्रेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? दे डू नॉट वांट टू नो मच अबाउट योर टेक्निकल नॉलेज बट दे वांट टू नो अबाउट योर पर्सनालिटी. How easily you're able to put forward that information in front of them, how easily you're able to express yourself or express the information that you have, right? And that's what they say, that they do not care or they do not want to assess the mastery of the content, but rather because they want to know if the students can talk about what they have learned. They care about the potential employees' abilities such as writing, researching, quantitative and analytical skills. All these things are being looked at by the employers in the employees, right? So now basically the main idea of the paragraph is कि content इतना important नहीं है, बाकी सारी जो skills है जो difficult है acquire करना वो ज्यादा important है and employers वही चीजें देखते हैं एक candidate में, right? Now if you look at the A option, it says as students flock to the 2 or 3 majors they see as good investments, प्रोफेसर्स हु टीच इन दोज मेजर्स आर ओवरबर्डनड. क्या पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी प्रोफेसर्स या ओवरबर्डनिंग की बात हुई है? इज इट कंप्लीटली एलियन? यस, कंप्लीटली एलियन है बिकॉज द टॉपिक इज नो वेयर गेटिंग कनेक्टेड टू द पैराग्राफ.
प्रोफेसर्स की ना बात हुई है, ना ओवरबर्डनिंग की बात हुई है, ना ऐसी कोई भी टॉपिक की बात हुई है पैराग्राफ में. सो दिस गोज आउट. नाउ वी आर लेफ्ट विथ बी, सी एंड डी. बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? Often it is the art historians and anthropology majors, for example, who, having marshaled the abilities of perspective, breadth, creativity, and analysis, have moved a company or project or vision forward. Now, this was again a definitely very, very close contender, but this is not the correct answer. It definitely talks about creativity, analysis, and how they're giving you an example of art historians and anthropology. But why is this option not the correct answer for you? This might have served as a good example to this paragraph. Then why did you not prefer taking this option as a correct answer? Why this option is not correct? Anyone? एटलीस्ट जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है वो लोग बता सकते हो बी क्यों करेक्ट नहीं है? यस. No, even if it talks about anthropology, it could have been an example to the given paragraph. Example हो सकता था एक paragraph का कि कैसे ये जो fields है historians और anthropology की, ये लोग भी काफी importance देते हैं creativity को. Then why is this not the answer? Lack of keywords. Okay, Aditi. Fine. Exactly correct, Arjun. That's the point. राइट हमें पैराग्राफ में क्या बोला गया है? दैट एम्प्लॉयर्स जब एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, उन्हें हायर करते हैं जॉब के लिए, तो वो क्या ढूंढते हैं उन एम्प्लॉयज में. लेकिन यहाँ पे तो एक कंपनी को आगे बढ़ाने की बात हुई है. राइट, वी आर नॉट सेइंग कि कैसे लोग इन स्किल्स को यूज करके अपनी कंपनी को या विजन को आगे बढ़ाते हैं. We are not talking about entrepreneurs here. We are talking about employers seeing things or seeing qualities in employees. जॉब्स की बात हो रही है, ना कि एक कंपनी को आगे बढ़ाने की. सो द कॉन्टेक्स्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट. यस करेक्ट अर्जुन. राइट राजदीप. यस क्लियर है. सो दिस ऑल्सो गोज आउट. नाउ ऑप्शन सी देखो. फर्दर मोर द लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड earnings is notoriously fraught. यहीं पे रुक जाओ. Are we talking about earnings at all? अगेन अर्निंग्स और एजुकेशन का जो कनेक्शन है वो एक नया थॉट ऐड कर रहा है. वी डोंट हैव टू ऐड इन थॉट्स, वी डोंट हैव टू ऐड इन मोर एंड मोर थॉट्स, वी जस्ट हैव टू फिनिश द पैराग्राफ. एंड बिकॉज द अर्निंग्स इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैराग्राफ, वी विल सिंपली एलिमिनेट इट. राइट, D option is definitely the correct answer. It says a vocational approach. Vocation यानी वही job होती है, right? Vocation is your work, your job. So a vocational approach to education eviscerates यानी किसी चीज को हटा देना basically. Eviscerates precisely the qualities that are most valuable about it. Intellectual curiosity, creativity and critical thinking. Right? ये क्या बोल रहे हैं? That आप जब एक जॉब की अप्रोच को लगा के एजुकेशन लेते हो, आप लेट्स से ये सोचते हो दैट इफ आई चूज फाइनेंस आई डेफिनेटली बी गेटिंग अ गुड जॉब, तो वो गलत होगा. वो आपकी क्वालिटीज को कम इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, वो आपकी क्वालिटीज को प्रॉब्ली एविसरेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे. बिकॉज the best thing to concentrate on is how easily you can acquire more and more skills, not how easily you will get a good job. आपको जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करके major choose nahi karna hai, you'll have to concentrate on qualities more. And that's what the paragraph says, because the employers do not concentrate on the content, they do not concentrate on the majors, they concentrate on your qualities. And that's what the D option also says, that a job approach, a vocational approach to education eviscerates or removes precisely the qualities that are most valuable about it. Is it clear, guys? Yes or no? Why are we choosing option D? I hope now it's clear. See, option A कंप्लीटली एलियन था. ऑप्शन बी कंपनी की बात कर रहा है, कैसे कंपनी को आगे लेके जाए, विच इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हियर. ऑप्शन सी अर्निंग्स की बात कर रहा है, अगेन इट इज इररिलेवेंट टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस इन द पैराग्राफ, एंड देयरफॉर वी विल एंड अप चूजिंग ऑप्शन डी एज द आंसर. आई होप इट इज क्लियर. शुभम, इज इट क्लियर? शुभम, हर्ष, नमन, योगेश, प्रगति, खुशी, प्रसाद, all of you, I hope clear है सबको. Okay, great. Let's move on to the next question. Didn't understand why we eliminated B. B option. See, Yogesh, हमने paragraph में क्या बोला है? The paragraph talks about
employers seeing or looking for particular qualities in employees, right? So let's say आप एक employer हो और आप कैंडिडेट्स जिनको आप हायर करते हो उनमें क्या क्वालिटीज देखते हो वो आप बता रहे हो। लेकिन बी ऑप्शन में ये बोला है कि कैसे कोई लोग आर्ट हिस्टोरियंस और एंथ्रोपोलॉजी में मेजर्स करके एक कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। पैराग्राफ में हम कैसे कंपनी को आगे बढ़ाएं इसकी बात नहीं हुई है। पैराग्राफ में इस चीज की बात हुई है कि एम्प्लॉयर्स जब एम्प्लॉइज जब जब लोगों को हायर करते हैं अपनी कंपनी में तो वो उनमें कैसी कैसी क्वालिटीज देखते हैं। दैट्स द फोकस ऑफ द पैसेज, not how you take forward a company or how you take forward the vision of the company ahead. This is not the focus of the paragraph. Clear, Yogesh? And that's why we are eliminating option B. Okay, let's move on to the next question. Come on, try this. It's comparatively an easier one. So I would want all of you to answer it correctly. Come on. Aditi, reattempt. Shashank, correct. Hitesh, correct. Ashmit, reattempt. Harsh, correct. Satyam, correct. Rajdeep, reattempt. Shubham, reattempt. Prashad, correct. Aditi, correct. Pragati, correct. Naman, correct.
Khushi correct, Naman correct. Fine. Let's have a look. See, I think it was comparatively an easier one because आप अगर if you look at the first few lines of the paragraph, आपको पहली 3 लाइन पढ़ के ही आपका आंसर मिल जाना चाहिए था. Why? Because though more than one option would have looked similar to you or would have seemed to be getting connected to the paragraph, you just need to know that agar paragraph, okay, first of all, let's understand the paragraph. What the paragraph says: normally falling oil prices would boost global growth. यूजुअली क्या होता है कि अगर ऑयल प्राइसेस फॉल होती है तो वो इकोनॉमी को एक बूस्ट देती है, बिकॉज देन मोर एंड मोर पीपल आर एनकरेज्ड टू use more and more oil and then grow their businesses, right? So falling oil prices would definitely boost the global growth. This time though, matters are less clear cut. The big economic question is whether lower prices reflect weak demand or have been caused by a surge in the supply of crude. राइट तो अब क्वेश्चन ये है कि प्राइसेस कम क्यों हो रही है. अगर प्राइसेस कम एक वैलिड रीजन की वजह से हो रही है, देन डेफिनेटली वी विल हैव अ बूस्ट इन आवर ग्लोबल ग्रोथ. लेकिन प्राइस कम वीक डिमांड की वजह से हो रही है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? सो we need to see, the question is whether the lower prices reflect weak demand or have been caused by a surge in the supply. अगर सप्लाई बढ़ती है तो भी शायद प्राइसेस कम हो सकती है, राइट? इफ वीक डिमांड इज द कल्प्रिट. तो बेसिकली आपको दो चीजें बताई है दैट हमें पहले ये देखना है कि we first want to know that whether the fall in the oil prices will bring a boost in the economy or not. और उस चीज को जानने के लिए we need to know whether the fall in the prices are due to the weak demand or due to the surge in the supply of crude, right? तो हमें ये दोनों ही चीजों को एनालाइज करना है और आपको ये तुरंत पता लग जाना चाहिए था दैट इफ द पैराग्राफ इज just talking about the weak demand thing, then obviously in some or the other option we will be talking about this surge in supply of crude wala thing, right? Because there are two scenarios in this. पहले सिनेरियो की तो बात हो गई है पैराग्राफ में, बस हमें दूसरे सिनेरियो वाला ऑप्शन देखना था, right? It says that if weak demand is the culprit, that is worrying because it suggests the oil price is a symptom of weakening growth. If the source of weakness is financial, then cheaper oil may not boost the growth all that much. Consumers may simply use the gains to pay down their debts. Indeed, in some countries, cheaper oil may even make matters worse by increasing the risk of deflation, right? Now, a few of you ended up choosing this first option as the answer because it definitely takes the thought of deflation ahead, right? ये बोल रहा है that an energy induced drop in prices, though good for consumer purchasing power, risks in reinforcing expectations of lower inflation, which is deflation, right? Not exactly deflation, but is kind of getting connected to deflation. And it is basically elaborating this thought of deflation. Now, you might have thought that this option is the correct answer, but it's a trickier one, right? आपको ये जो deflation है उसके प्रोसेस को आगे लेके नहीं जाना है, आपको थॉट को कंप्लीट करना है. मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था दैट आपको लास्ट लाइन को कंप्लीट नहीं करना, आपको पूरे के पूरे थॉट को कंप्लीट करना है. एंड थॉट तभी कंप्लीट होगा व्हेन यू एक्सप्लेन द सेकंड रीजन एज वेल. सेकंड रीजन क्या है? वीक डिमांड तो हमने एक्सप्लेन कर दिया. सेकंड रीजन इज सर्ज इन द सप्लाई ऑफ क्रूड, which is clearly given to you in D option. On the other hand, if plentiful supply is driving prices down, surge in supply of crude यानी plentiful supply basically, ज्यादा supply, तो वो चीज आपको D में clearly दी है. It says that on the other hand, if plentiful supply is driving prices down, that is potentially better news. Cheaper oil should eventually boost spending in the world's biggest economies. So undoubtedly, this was your correct answer. If you would have read the third line carefully, you would have easily come to know that fourth option is going to be the correct answer. A option won't be because ये last line को आगे लेके जा रहा है, thought को आगे लेके नहीं जा रहा है, right? B option is irrelevant because I mean, we could take it as an alien option. There's nothing being talked about all this in the paragraph. C option बोल रहा है on balance, energy consumers win and energy producers and exporting countries lose. हमें ये नहीं देखना कि कौन सी countries win कर रही है और कौन सी countries lose कर रही है इस चीज से. That's not the focus. Exactly, winning or losing is not the focus of the paragraph here. Focus क्या है? That
रीजन क्या है फॉलिंग ऑयल प्राइसेस का? दो रीजंस दिए हैं, या तो रीजन वीक डिमांड हो सकती है या रीजन प्लेंटिफुल सप्लाई हो सकता है, और हमने उन दोनों रीजंस को एनालाइज किया है. अगर पहला रीजन है वीक डिमांड है, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, और अगर दूसरा रीजन है विच इज द प्लेंटिफुल सप्लाई, देन इट्स अ गुड थिंग फॉर अस. इट विल डेफिनेटली लीड टू अ बूस्ट इन द ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ. Getting it, guys? Yes or no? And therefore we will end up choosing the D option as the correct answer. Is it clear? Shubham, clear? Rajdeep, any questions? Ashmeet? Okay, fine. Let's move ahead. Just give me a second. Okay. Fine. The next question is right in front of you. Come on. Okay. Bikash Jyoti reattempt. Satyam correct. Arjun correct. Yogesh correct. Parnika correct. Neha correct. Khushi correct. Ashmit reattempt. Aditi correct. Shashank correct. Hitesh correct. Naman reattempt. Unnati correct. Fine. Let's have a look. See, what is the paragraph all about? The paragraph says the true essence of a writer's voice lies far beneath the surface, right? It means that जो ट्रू इंपॉर्टेंस है, जो ट्रू एसेंस है, जो ट्रू वैल्यू है एक राइटर के वॉइस की, वो बहुत ज्यादा है जितनी दिखती है उससे. जो सरफेस पे आपको दिख रही है, इट्स फार मोर देन दैट. इट इज नॉट म्योरली अ मैटर ऑफ ग्रामर एंड वर्ड चॉइस. शुभम करेक्ट. ये सिर्फ ग्रामर या वर्ड चॉइस पे डिपेंड नहीं करता. इट्स जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ ग्रामर और वर्ड चॉइस. इट इज द राइटर्स क्रेविंग टू कनेक्ट. How does that writer connect with you? Yes, Rajdeep, correct. It is less craft and more courage, less ink and more blood. It is not only how the writer tells his story, it is the story he chooses to tell. The story he must tell, it is the reason he writes. Right? So, the craft is not important, the courage is important, the words or the ink is not important,
but the blood is important, right? It's not how he tells his story, but it's how he chooses his story well, right? Uske andar ek story hai jo wo eagerly batana chahta hai aap sabko, how he wants to connect with you all, right? And that's what the paragraph says, that grammar or word choice is not important, words are not important, but the courage or the connection is important, right? अब ए ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, इट रिवील्स इटसेल्फ इन डिटेल्स द आई डजंट इजीली टेक इन, फाइन, यहां तक करेक्ट है. In some unexpected hesitation or cunning adverb or barely audible inflection that makes you sit up and take notice. ये inflection जो है और जो adverb है, both these words are grammar words. ये grammar से connect हो रहे हैं, and the paragraph clearly says that it's just not about grammar and word choice, and hence this goes out because this option gives importance to grammar. It gives importance to adverbs and inflections. Hence, this goes out as the correct answer. Option B, dekho. And contrary to popular belief, a writer's voice is learned more than it's found or discovered. Are we talking about any of this? क्या हमने पैराग्राफ में ऐसा बोला है कि राइटर की वॉइस को हम सीखते ज्यादा है, लर्न ज्यादा करते हैं मोर देन हाउ इट इज found or discovered? Are we talking about discovering or finding or learning the writer's voice? No, the main focus is not this at all, right? It's not the focus of the paragraph. The focus is that how grammar and words are less important than the story behind that, right? It is irrelevant. Correct, Aditi. So this goes out as well. C says correctly that it is the fury truth that burns in his heart until it becomes unbearable to wait even a single moment longer before putting pen to paper or fingertips to keyboard. राइट, राइटर के अंदर बहुत कुछ बर्न हो रहा है, ही ईगरली वांट्स टू ब्रिंग ऑल दैट आउट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग्स, राइट? उसके अंदर की जो भी स्टोरी है वो उसे बाहर लाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ अ पेपर एंड अ पेन, एंड ही वांट्स टू कीप दैट पेपर और कीप दैट राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. सो दिस इज important. The story burning inside him is important, and how he wants to connect with you all by keeping that story in front of you. So this is definitely the correct answer. It goes with the main focus or the main idea of the paragraph, right? D says it is the way an author expresses personal attitude through word choice, asides, sentence flow, paragraph density. All these are related to grammar and words, right? So ये तो completely opposite है paragraph से. It's similar to A option. A option भी grammar की बात कर रहा है, D option भी grammar and word choices की बात कर रहा है. So both of them are completely opposite to what is given to you in the paragraph, and therefore it goes out. राइट, हर्ष बी ऑप्शन इसीलिए एलिमिनेट कर रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट द फोकस ऑफ द पैराग्राफ. हमने पैराग्राफ में ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है कि हमें राइटर की वॉइस को कैसे डिस्कवर करना है या कैसे उसकी वॉइस को लर्न करना है. हम जस्ट ये बोल रहे हैं कि राइटर के लिए ग्रामर और वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी करेज, उसका जो connection hai, how eagerly he wants to make a connection with all of us through his words. That is important. So ye focus nahi hai paragraph ka, and that's why we are eliminating it. Clear, Harsh? Is it clear to all of you? Can I have a yes in the chat box if this was clear, please? From all of you, please. Is it clear? Okay, fine, great, thank you. We'll move to the next question. Come on, it's right in front of you. Very, very easy. I want all correct answers. I do not want to spend much time on this. So please, all correct answers. Come on. Options are really easy. Aditi, correct.
Unnati correct, Arjun correct. Harsh reattempt, Yogesh reattempt. Exactly. These options are really so funny that it would have been so easy for you to Rajdeep reattempt, Hitesh correct, Bikash Jyoti reattempt, Shubham correct, Parnika correct, Shashank correct. See, the paragraph simply says Pragati reattempt, Yogesh correct. Guys, I don't know why did you get this one wrong? Kitna easy hai ye? I mean, the options are so funny that Ashmit correct, Satyam reattempt, Rajdeep correct. See, what's the paragraph trying to tell you? While your intentional mind is thoughtful, it's it's easily waylaid by deep-seated habits. If you're trying to lose weight, for example, standard interventions like weight loss programs will leave your intentional mind feeling motivated, but they won't feed your habitual mind. So the paragraph basically says that just because you have intentions in your mind to do something doesn't mean you'll actually do it. राइट अगर आपका इंटेंशन है कि आप कैट में 99 परसेंटाइल लेके आओ तो वो आपका इंटेंशन है दैट डजंट मीन के exactly yes that doesn't sorry that doesn't mean that you'll actually do it unless you change your habits. अब इंटेंशन है माइंड में कि कैट में 99 परसेंटाइल लाना है लेकिन पूरा दिन इंस्टाग्राम करना है तो होगा नहीं हो पाएगा ना राइट सो दैट्स व्हाट द पैराग्राफ सेज बाय गिविंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स that in order to actually act upon your intentions it's really important to change your habits or at least give a way to changing your habits and that's what it says that आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है that standard interventions like weight loss programs will leave your intentional mind feeling motivated. Definitely it will keep you motivated, but they won't feed your habitual mind. To accomplish that, you must first derail the existing habits and create a window of opportunity to act on new intentions. राइट अगर आपको कोई चीजें अचीव करनी है इंटेंशंस को अचीव करना है देन आपको पहले एग्जिस्टिंग हैबिट्स को हटाना होगा डीरेल करना होगा जो खराब हैबिट्स है उन्हें एंड यू विल हैव टू एटलीस्ट क्रिएट अ विंडो सो दैट नई हैबिट्स है वो आ सके इन ऑर्डर टू फुलफिल योर इंटेंशंस राइट नाउ सी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो आई डोंट नो क्यों चूज किया आपने आई मीन First option says, so the next time you want to watch your favorite movie on TV show or TV show on Netflix, make yourself watch it on the treadmill instead. क्या ऐसा बोला है कि दो काम एक साथ करो? ऐसा बोल just because you're being given an example on weight loss first of all doesn't mean that you'll end up choosing an option connected to the treadmill. राइट ये सिर्फ ऑप्शन एज एन आई मीन ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया था आपको मेन फोकस नहीं है राइट but by D option you try to complete last line. Rajdeep, why not option? Okay, I'll tell you why. Option A is talking about doing two things simultaneously. That's not the focus of the paragraph, right? Focus ये है कि आपको existing habits को हटा के नई habits के लिए विंडो क्रिएट करनी है राइट नाउ हाउ इज दिस ए ऑप्शन एनीवेयर गेटिंग कनेक्टेड टू द पैराग्राफ by watching Netflix and doing treadmill together? It's nothing, nowhere getting connected, right? So this goes out. Same with option C, doing squats and calf raises while brushing your teeth, for example, will reward you with double confidence. कहीं नहीं बोला है पैराग्राफ में कि दो चीजें एक साथ करो, right? Again, this goes out. These two options were so funny that you would have eliminated them at the very first glance, right? Now let's look at option B. Option B क्या बोल रहा है? Studies have shown that maintaining a food diary, a record of everything you eat and drink, is one of the best ways to start. See, first of all, those who ended up choosing option B as the answer, why we are not choosing option B, there are so many reasons. The first reason is the focus of the paragraph is not just on diet, following a diet or getting, thin. This weight loss वाली चीज ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी. दिस डजंट मीन कि आप वेट लॉस की बातें करोगे ऑप्शन में और आप वेट लॉस से ही पैराग्राफ को एंड कर दोगे. ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था खाली दैट अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, इफ यू वांट टू एक्ट ऑन योर इंटेंशंस, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेंज योर हैबिट्स फर्स्ट, बिकॉज इंटेंशन से कुछ नहीं होगा, हैबिट से होगा, हैबिट्स चेंज करने से होगा.
राइट। तो पहली चीज, ये जो बी ऑप्शन है वो पर्टिकुलरली वेट लॉस या फूड की या हैबिट्स की, आई मीन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग की बात कर रहा है, विच इज नॉट द मेन फोकस ऑफ द पैराग्राफ। दूसरी चीज, इवन इफ दिस वाज द फोकस ऑफ द पैराग्राफ, ये रिकॉर्ड करने की बात नहीं कर रहा है पैराग्राफ। इट इज नॉट टेलिंग यू टू keep a diary and record each and everything in that diary. Even if you try recording each and everything in your diary, this won't change your habits. Habit change करने के लिए चीजों को बदलना पड़ेगा, सिर्फ रिकॉर्ड करने से काम नहीं होगा। ये तो वही बात हुई ना कि आप बेसिकली एक विश लिस्ट बनाते हो न्यू ईयर पे कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, राइट, एंड यू जस्ट वो चीजें वहीं की वहीं रह जाती है डायरी में, यू डोंट एक्ट अपॉन देम। So the paragraph is not saying or is not asking you to record each and everything or to keep a diary. It basically asks you to change your habits, right? Which is nowhere getting connected with B option. And that's why we will end up choosing. Yes, correct. Exactly. Arjun. So D option says get rid of unhealthy cues. That's what the paragraph says. Unhealthy habits जो है उन्हें निकाल दो. Get rid of them by moving junk food out of your pantry and put fresh fruit out where it's easy to see. गलत चीजों को अपनी लाइफ से निकालो और फ्रेश चीजों को अपने सामने रखो, so that you create a window for those fresh things and you start acting on your intentions. Getting it, guys? Yes or no? Rajdeep, clear हुआ अब? The focus is not on, yes Harsh, but सी बिगर पर्पस को देखो, जंक फूड को मत देखो, पर्पस को देखो। फोकस क्या है पैराग्राफ का? लास्ट लाइन क्या बोल रही है? दैट डीरेल योर एग्जिस्टिंग हैबिट्स एंड क्रिएट अ विंडो फॉर द न्यू हैबिट्स। डी ऑप्शन भी कहीं ना कहीं वही बोल रहा है, फोकस ऑन द पर्पस, डोंट फोकस ऑन द वर्ड्स। पर्पस ये है दैट गेट रिड ऑफ एक्स and give window to Y. Get rid of unhealthy cues by moving junk food out of your pantry and put fresh things so that they are easy to see. Getting it, Harsh? So the focus is not fitness. The focus is to change each and every single habit which leads you to act upon your intentions. So this was just an example. Clear? You have to keep maintaining the focus. You don't have to concentrate on the less valuable details. D option might have concentrated more on food, but indirectly it finishes off the paragraph by concentrating on the focus of the paragraph. Clear? Okay, great. Let's move on to the next one. Come on, try this again. I think comparatively an easier one. Okay, so I have the answers. Unnati reattempt, Aditi reattempt, Hitesh, Yogesh reattempt, Ashmit correct, Satyam reattempt, Prashad correct, Naman reattempt, Harsh reattempt, Rajdeep reattempt, Pragati reattempt, Khushi correct, Aditi correct. Yogesh correct, Unnati correct, Shashank correct, Naman reattempt, Harsh correct. Come on, last few seconds. Pragati correct. Yes, I'll definitely do that, Yogesh. Just wait for a moment. Because 90% of you guys have ended up choosing B option at the very first glance.
Rajdeep, reattempt. Pragati, correct. Yes. Fine. Yes. Okay, fine. Let's have a look. Arjun, reattempt. Yeah. See. Let's have a look. Paragraph क्या बोल रहा है? When asked to think of a random number between 1 and 10, जब लोगों से पूछा गया that just pick a random number between 1 and 10, तो क्या हुआ? Most people thought of 7. If you're being asked to choose a random number between 1 to 10, you'll end up choosing 7. Most people, right? This response is determined by arithmetic. ऐसा क्यों होता है? उसकी रीजनिंग दी है that it is supported by arithmetic. The numbers 1 and 10 do not feel random enough. जो 1 और 10 नंबर है, दो नंबर्स, वो रैंडम नहीं लगते इतने, इसीलिए वो लोग उसे चूज नहीं करते. Neither does 5. 5 भी रैंडम नहीं लगता, इसलिए लोग उसको भी चूज नहीं करते. Which is right in the middle. Nor do 2 and the even numbers. 2 और जो बाकी के इवन नंबर्स है वो भी लोगों को रैंडम नहीं लगते, इसलिए लोग वो भी चूज नहीं करते. Which are factors or multiples of others. The number 7 emerges the winner more often than not, since it is the only number that cannot be divided or multiplied within the first 10. राइट. सो आपको रीजनिंग क्या दी है? दैट बाकी सारे नंबर्स रैंडम नहीं लगते, और ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजन कि जो इवन नंबर्स है वो भी लोगों के माइंड में नहीं आते, या फिर जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स है दूसरे नंबर्स के, वो भी लोगों के माइंड में नहीं आते. 7 इसीलिए माइंड में आता है बिकॉज इट इज different, it is exclusive, it cannot be divided or multiplied within the first 10, and that's why most of the people end up choosing the number 7 when given the choice to choose the number between 1 and 10. Now this is what the reasoning is being given to us. अब हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इस पैराग्राफ के फोकस को मेंटेन रखे, राइट? A option says this is interesting, as studies have shown that even numbers are generally more liked than odd numbers. ये तो कंप्लीटली उल्टा बोल रहा है पैराग्राफ से, राइट? पैराग्राफ में लिखा है दैट पीपल डू नॉट प्रेफर टू चूज इवन नंबर्स, और ए बोल रहा है दैट इवन नंबर्स आर जनरली मोर लाइक्ड देन द ऑड नंबर्स. तो ये तो आउट हो गया. It completely gets eliminated because it is completely opposite to what is being given to us, so it goes out. D says 7 is literally more thought provoking. It takes our brains longer to process odd numbers. ऐसा कहां पे लिखा है that it takes our brain to process the odd numbers longer? ऐसा कहीं पे लिखा है कि odd numbers को process करने में बहुत टाइम लगता है हमारे ब्रेन को? कहीं पे भी ऐसी बात हुई है पैराग्राफ में? Then take it as an alien option and eliminate it, right? Goes out. Now we are left between two options, B and C. C बोल रहा है 7 feels more random and elusive. Definitely it is true, because पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है दैट ना ही 1 and 10 रैंडम लगते हैं लोगों को, ना ही 2 और इवन नंबर्स रैंडम लगते हैं, उन्हें 7 रैंडम लगता है. व्हाई? बिकॉज वो इल्यूसिव है, वो सबसे अलग है, एंड अरिथमेटिकली भी उन्होंने बोला है दैट ये जो पूरा रीजनिंग है वो अरिथमेटिक पे बेस्ड है. This whole reasoning is supported by arithmetic because people find this 7 number more random. And the reason is that it cannot be divided and multiplied within the first 10. And that's why this clearly supports the reasoning and the focus of the paragraph. It says 7 number feels more random and elusive because arithmetically speaking it is. Arithmetic isko support kar raha hai, right? अब you might feel ke jo B option hai wo kyun nahi hai answer. See, it was really very, very easy to say कि B क्यों नहीं है. I don't know why you guys got confused. ये बोल रहा है it turns out as the world's favorite number. क्या ऐसा कहीं पे लिखा है that people choose 7 because it is their favorite number? Favorite number ऐसा कहाँ बोला है? Reasoning इसीलिए दी है because it is supported by arithmetic, not because it is the world's favorite number.
लोग इसीलिए 7 को चूज नहीं करते बिकॉज वो उनका फेवरेट नंबर है. लोग इसीलिए चूज करते हैं बिकॉज देयर इज अरिथमेटिक बिहाइंड इट, बिकॉज दे डू नॉट फाइंड दैट नंबर divided or multiplied within the first 10, and that's why they find that number random, right? No, Pragati, the reason is not because it starts with it. Ye 8 to 7 के लिए ही यूज हुआ है, that it turns out the world's favorite number is 7. ये 7 के लिए ही यूज हुआ है it. So exactly, Aditi. So most of you guys inferred it. आपने पूरा पैराग्राफ समझ लिया एंड यू एंडेड अप थिंकिंग दैट ओके 7 अगर सब लोग चूज कर रहे हैं तो 7 उनका फेवरेट नंबर ही होगा. That does not mean it is true. Just because you're choosing something doesn't mean it's your favorite. There is a completely different reasoning behind it, right? So B option, that's why it gets eliminated and we end up choosing C option as the correct answer. Is it clear to all of you? Sab, please एक बार सब लोग yes लिख दोगे chat box में so that I can move on with the last question of the session. Just a yes, please. Okay, great. Come on, try this. Okay, just a moment. Let me choose. Come on, try this. A series of fascinating papers. Ashmit, correct. Aditi, reattempt. Satyam, correct. Yogesh, correct. Hitesh, correct. Khushi, correct. Shashank, correct. Shubham, correct. Harsh, reattempt. Harsh, correct. Yes, sure, Arjun. Take your time. Come on, last 1 minute. Prashad, reattempt. Pragati, correct. Aditi, correct. Rajdeep, correct. Fine. See, what is the paragraph trying to make us understand? We have confusion in two, like in this A and D are eliminated easily. Let's see. Okay, I'll talk about it, Harsh. See, जो भी similar options दिखते हैं ना, try to compare both of them with each other and then try to see what the focus of the paragraph is. I'll let you know case में कैसे deal करना है.
So the paragraph says a series of fascinating papers suggest that in humans and other social mammals, social pain and physical pain are processed by the same neural circuit. जो हमारे ब्रेन में सर्किट होता है जो सिग्नल्स देते हैं पेन का, राइट? आई होप यू ऑल नो दैट पेन कम्स फ्रॉम ब्रेन, राइट? जैसे आपको कभी लग जाती है तो आपको पेन क्यों फील होता है? बिकॉज ब्रेन सिग्नल देता है दैट यू आर इन पेन. इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज ब्रेनलेस, देन चाहे उसको कुछ भी हो जाए उसको पेन नहीं होगा. सो पेन कम्स फ्रॉम ब्रेन एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर बॉडी पार्ट, राइट? तो ये क्या बोल रहे हैं? जो भी ह्यूमंस और सोशल मैमल्स होते हैं उनमें जो सर्किट है जहां से पेन आता है वो सर्किट सेम है सोशल पेन के लिए भी और फिजिकल पेन के लिए भी. तो अगर कोई पर्सन सोशली पेन में है तो वो उसी सर्किट से आएगा, फिजिकल पेन भी उसी सर्किट से निकल के आएगा, राइट? सेम न्यूरल सर्किट से. यस, करेक्ट अर्जुन. This might explain why in many languages it is hard to describe the impact of breaking social bonds without the words we use to denote physical pain and injury, right? And that's why it's impossible to describe the physical to describe the social pain without the use of the words used in physical pain or injury. Let's say for example koi koi socially, let's say किसी का ब्रेकअप हो गया, राइट? नाउ व्हाट डू वी से दैट ओ माय गॉड यू गॉट हर्ट, राइट? और अगर किसी को फिजिकली पेन होता है तो भी हम बोलते हैं ओ गॉड यू गॉट हर्ट, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी से दैट फिजिकल पेन और सोशल पेन दोनों में सेम वर्ड्स भी यूज होते हैं, राइट? And it is hard to describe the impact of breaking social bonds without the words we use to denote the physical pain and injury. Social contact even reduces the physical pain. अब वो लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है? दैट अगर कोई फिजिकल पेन में है और अगर हम उसे सोशली कॉन्टैक्ट देते हैं, हम उसे सोशली सहारा देते हैं, देन इट माइट रिड्यूस देयर फिजिकल पेन एज वेल. दैट्स हाउ द सोशल कॉन्टैक्ट एंड फिजिकल पेन आर कनेक्टेड टू ईच अदर. Right. Now, if you look at the first option, it's completely irrelevant to the passage because it talks about the torture. Is the paragraph anywhere talking about the torture? Does it say कि चाहे physical pain ले लो या social pain ले लो वो आपको torture देता है? This word torture gives an additional thought to this paragraph and therefore will eliminate it. Right? We're not talking about torture at all in this paragraph. So it goes out. D option says the impact of loneliness on physical health is comparable to that of smoking 15 cigarettes a day. Loneliness appears to raise the risk of early death by 26%. See, last line जो है वो हमें बोल रही है कि सोशल कॉन्टैक्ट से फिजिकल पेन कम होता है. Whereas this says उल्टा, ये उल्टा बता रहा है, ये एक नेगेटिव इफेक्ट बता रहा है. Moreover, also we are not talking about cigarettes or early death at all. But still, even if you did consider this, it would have been irrelevant as far as the ending of the paragraph is concerned, because paragraph का end क्या बोल रहा है कि social contact से pain कम होता है, ये pain बढ़ाने की बात कर रहा है. Hence, this goes out. Moreover, the paragraph does not talk about death at all. Right? So this goes out. C option talks about self-harm. खुद को ठेस पहुंचाना, खुद को ही हार्म पहुंचाना. Are we talking about self-harm as a concept in the paragraph? Harsh, are we okay? Tell me one thing. Are we talking? If you got confused between B and C option, tell me one thing. Isn't this self-harming thing adding a new thought to the paragraph? Are we talking about self-harm at all? क्या हमने बोला है कि हम खुद को हार्म करते हैं? Self harm is often used as an attempt to alleviate distress, another indication that physical pain is not as bad as emotional pain. Are we talking about it at all? No, self harming तो अलग ही सिनेरियो है, हम बात ही नहीं कर रहे उसकी. Self harm is basically an example of suicide. Are we talking about it? No. B option says this is why we hug our children when they hurt themselves. Affection is a powerful analgesic, right? Now, ये क्या बता रहा है? लास्ट लाइन में क्लियरली लिखा है दैट अगर हमें कोई पेन में दिखता है, फिजिकली पेन में, तो हम उन्हें सोशली सहारा देते हैं बिकॉज इट कैन रिड्यूस देयर फिजिकल पेन. एंड इसी चीज का वो लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं दैट जब हमें हमारे बच्चों को लग जाती है, वी जस्ट हग देम एंड दैट अफेक्शन, जो अफेक्शन हम उन्हें दिखाते हैं वो उनका बेसिकली पेन कम कर देते हैं, फिजिकल पेन कम कर देते हैं, राइट? So this B option is nothing but the example of the last statement, that's why we hug our children when they hurt themselves, because the affection, it's a powerful tool. It basically reduces their physical pain, right? So it is nothing but the example of the last line.
whereas बाकी जो सारे एग्जाम्पल्स है वो irrelevant है. यहाँ डी ऑप्शन में डेथ की बात नहीं हो रही है, ए ऑप्शन में टॉर्चर की बात नहीं हो रही है, सी ऑप्शन में सेल्फ हार्म. इट्स अ completely different concept. And that's why we end up choosing B as the answer. Moreover, it is also an example to the last line. Getting it, guys? Yes or no? Is it clear to all of you? Harsh, clear? Aditi, all of you, the one who end up choosing the wrong answer. Prashad, Arjun, clear है सबको? Any questions? Any doubts? Okay, then fine. See, we are ending this chapter today. Para completion end kar rahe hain, and there are still a lot of questions left in this PPT. So I'll probably share it on the drive. If you can, if you're able to access the drive, then please finish off all the rest of the questions. And if you have any doubts, then you can just ask me on my WhatsApp number. You can just post in your doubt on the WhatsApp number, or we can just solve them in the doubt session on Monday, right? But please keep practicing things, right? Otherwise you'll lose the connection. Okay, then great. It was really nice to have you all. Bye bye, guys. Take care and enjoy the weekend. Aditi, you can just I think you all have my number. You all can just drop in your doubts or drop in your answers. I can just revert you back with the answer key. Or if you can wait, I can just share you the answer key in the next session, right? In which ways is fine with me. Thank you so much, Rajdeep. It means a lot. Yes, Arjun. ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड्स कॉमन होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स अलग भी हो सकते हैं. इमोशनल पेन हम बहुत सारी तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं. ऐसा भी बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड, बट ऐसा भी बोलते हैं दैट आई एम हर्ट, राइट? सो इट्स जस्ट दैट some words or most of the words are common, right? Yes, I can share my number if anyone wants to know. Okay, I think it's better to just do one thing. Just give all the questions a chance. सारे questions एक बार crack कर लो, and you can just ask me your doubts in the Monday session, because Monday को वैसे भी आप लोगों के doubts नहीं निकल के आते हैं. So it's better कि आप लोग Monday को पूछो ताकि doubt session utilize हो, right? So सारे questions attempt कर लो, and then we can probably solve them in the doubt session. That would be more easy, right? Okay, guys, then yes, I'll upload the PDF on the drive, right? You can just, if you want the access to the drive, you can just drop in a mail on the EduShastra ID, support@edushastra.com. You can just drop in a mail that I want an access to the drive. They'll revert you back. They'll reply, right? Harsh, I worry that I don't think that would be possible. You can just get the access to the PPT from the drive itself, right? Okay, then. Thank you so much, guys. Bye-bye. Take care. Good night. Bye-bye.